नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे भारत में सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया है। उसी तरह बड़ौदा शहर में भी सुशासन सप्ताह का आरंभ राज्य के महसूल मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी की उपस्थिति में किया गया। बड़ौदा शहर के सर सयाजी नगर गृह में एक विशेष कार्यक्रम में इसकी शुरुआत करवाई गई, जिसमें राजेंद्र त्रिवेदी के हाथों से कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया। खासतौर पर इसमें महिला एवं बाल विकास राज्य कक्षा मंत्री मनीषा वकील की उपस्थिति रही और साथ ही में सांसद रंजनबेन भट्ट भी उपस्थित रहे थे। इस मौके पर राजेंद्र त्रिवेदी ने राज्य सरकार के जो विकास की यात्रा है उसके बारे में जानकारी दी थी और साथ ही में खास तौर पर अब ऑनलाइन तकनीक के जरिए योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की भी कार्यवाही राज्य सरकार की ओर से की गई है। ऑनलाइन तकनीक के जरिए भ्रष्टाचार में भी कमी होने की बात महसूल मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी की ओर से कही गई थी। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्थायी समिति के अध्यक्ष की भी मंच पर मौजूदगी रही थी। इस मौके पर खास तौर पर जो विभिन्न सरकारी योजनाओं है उसके जो लाभार्थी हैं उन्हें भी चेक वितरित किए गए थे। सुशासन की व्याख्या એટલે ઝડપી નિર્ણય, સુશાસનની વ્યાખ્યા એટલે સીધો લોકોને લાભ થાય, એ સુશાસન। અને એ સુશાસન માટે, ગુડ ગવર્નન્સ માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ આગ્રહ સેવ્યો છે। સમગ્ર ભારતની અંદર તમામ સ્તરે આ સુશાસનનો સપ્તાહ ઉજવાઈ રહ્યો છે। દરેક રાજ્ય, દરેક શહેર, દરેક નગર, દરેક મહાનગરપાલિકાઓ, નગરપાલિકાઓ એકબીજાની સ્પર્ધા કરે અને સ્પર્ધાની અંદર લોકોનો સારામાં સારો લાભ કઈ રીતે કરાવી શકાય, છેવાડાના માનવીને એનો લાભ કેવી રીતે મળે। એક ગરીબ હોય, ઘર વિહોણો હોય, છત ન હોય, રસ્તે રઝળતો હોય, ભિક્ષુક હોય, હજુ ગઈકાલે જ આપણે જોયું અનેકવિધ કાર્યક્રમો સરકારે યોજ્યા છે, એનો લાભ લોકો સુધી પહોંચે। આદરણીય પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ને ભારત રત્ન અટલ બિહારી વાજપેયીજીનો જન્મદિવસ એટલે 25 ડિસેમ્બર, એ નિમિત્તે આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ સુશાસન સપ્તાહ તરીકે ઉજવવાનું જ્યારે નક્કી કર્યું છે અને આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવના ઉપક્રમે એક ભવ્ય કાર્યક્રમ લોકાભિમુખ વહીવટની લોકોને અનુભૂતિ થાય એવા નિર્ણયો જાહેર થાય, એવા નિર્ણયો લેવાય કે જેથી લોકોના કામોને સરળતા મળે। જ્યાં સુધી મારા મહેસૂલ વિભાગને લાગે વળગે છે ત્યાં સુધી લોકોને સરળતા કરી આપવા માટે ડિજિટલનો ઉપયોગ, ઇલેક્ટ્રોનિકલ માધ્યમનો ઉપયોગ કરીને આખી વ્યવસ્થા સુચારુ ઊભું કરી રહ્યા છે, જેને કારણે સંપૂર્ણ ટ્રાન્સપરન્સી રહે, વ્યવસ્થાની અંદર કોઈ માણસ ઘાલમેલ કરી ન શકે, કોઈનું કાંઈ નુકસાન ન થાય અને લોકોને સરળતાથી પોતાની સંપૂર્ણ માહિતી મળી શકે એવા નિર્ણયોમાં એક નિર્ણય એવો લીધો કે જે સમગ્ર ગુજરાતને અનેક ગરીબ તબક્કાના વર્ગને અડકે છે। સોગંદનામું કરવા માટે 50 રૂપિયાનો સ્ટેમ્પ, એના પર 20 રૂપિયાની ટિકિટ થાય, નોટરીના ખર્ચ થાય, આવવા જવાનો ખર્ચ થાય, 150, 200, 500 રૂપિયાનો ખર્ચ ગરીબ માણસને થઈ જતો હતો। એવો નિર્ણય લેવાયો છે અને આ નિર્ણય દૂરોગામી નિર્ણય છે કે સરકારની સહાયતા માટે, સરકાર જે સહાયતા આપે છે એવા કામોમાં સોગંદનામું હવે રજૂ કરવાની કોઈ જરૂરિયાત રહેતી નથી અને આ એક ખૂબ મોટો ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવાયો છે। આવા અનેક નિર્ણય લેવાયા છે। ઓનલાઈન જેવી રીતે 7/12/6ના ઉતારા મળી રહ્યા છે એવી જ રીતે રજિસ્ટ્રેશન થતા દસ્તાવેજોના પણ ઓનલાઈન નકલો મળશે। એ ઈ નકલો હશે, એ નકલો સર્ટિફાઈડ નકલો હશે, QR કોડવાળી હશે, જેને કારણે બેંક અથવા તો અન્ય કોઈ પણ ચકાસી શકશે કે આ દસ્તાવેજ સાચો છે કે કોઈ ફેબ્રિકેટ તો નથી ને। આવી વ્યવસ્થા સાથે મહેસૂલ તંત્ર પણ આગળ આવ્યું છે। સરકારે
ગરીબ વર્ગ માટે, છેવાડાના માનવી માટે પણ અનેક નવા કામો શરૂ કર્યા છે. આજે વડોદરા ખાતે સુશાસન અઠવાડિયાનો બીજો દિવસ અને અર્બન લાઇવલીહુડનું પણ આજે એક ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યા. નગરપાલિકાની સાથે કોર્પોરેશનના પણ ઘણા લોકાર્પણના કાર્યક્રમ આજે થયા છે. ગઈકાલે પણ સીએમ સાહેબની અધ્યક્ષતામાં અહીંયા જે ભિક્ષુકો માટે ખાસ જે યોજના કરવામાં આવી કે એ લોકો પગભર થાય, એ લોકોને લારીનું વિતરણ, એ લોકોને ફ્રૂટની લારી એ લોકો કરી શકે, સેન્ડવિચની લારી કરી શકે અને પોતાની રોજગારી મેળવી શકે, એના માટેનો આ કાર્યક્રમ ગઈકાલે હતો. આવતા અઠવાડિયા સુધી અલગ અલગ વિભાગના લોકાર્પણ લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. અને ભાગરૂપે વડોદરામાં પણ આવતીકાલે WCD વુમેન એન્ડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટનો પણ કાર્યક્રમ પંડિત દીનદયાલ ઉપાધ્યાયમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. खेलकूद और युवा सांस्कृतिक विभाग गांधीनगर की ओर से बड़ौदा शहर में राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया है. 2 दिवसीय ये युवा उत्सव का आयोजन BRG ग्रुप संचालित उर्मी स्कूल में आज किया गया, जिसकी शुरुआत आज की गई. राज्य में जो खेल प्रतिभा है उसके साथ युवा सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच देने के लिए राज्य कक्षा के युवा सांस्कृतिक विभाग की ओर से ये आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ौदा युवा सांस्कृतिक विभाग कचेरी ने भी इसमें अहम रोल अदा किया है. ख़ास तौर पर आपको बता दें कि गुजरात के विभिन्न ज़िलों से चुने गए जो युवा हैं, जो सांस्कृतिक और कल्चरल विभाग में अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, वो यहाँ पर उपस्थित रहे थे. बड़ी संख्या में यहाँ पर करीबन 300 से ज़्यादा युवा कलाकार यहाँ पर उपस्थित रहे, जिसका शुभारंभ आज किया गया. और 2 दिवसीय इस युवा उत्सव में करीबन 15 कृतियाँ प्रस्तुत होने वाली है, जिसमें लोक नृत्य समेत नाटिका की प्रस्तुति भी होगी और सांस्कृतिक जो नृत्य है उसकी भी प्रस्तुति होगी. इस राज्य कक्षा के युवा उत्सव के बाद जिन लोगों को चुना जाएगा वो पौंडीचेरी में आयोजित राष्ट्रीय कक्षा के कला उत्सव में गुजरात का प्रतिनिधित्व करेंगे. રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ તેમજ કમિશનર યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ ગાંધીનગર દ્વારા આજ રોજ વડોદરા ખાતે રાજ્ય કક્ષાના યુવા ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને એની અંદર ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લામાંથી 400 જેટલા કલાકારો ભાગ લીધો છે. बड़ौदा शहर में सर्वरोग निदान कैंप आयोजित किया गया था. वाघोड़िया रोड के सूर्यनगर ग्राउंड पर ये सर्वरोग निदान कैंप आयोजित किया गया. शिवाय क्लिनिक की ओर से ये आयोजन हुआ था. इसमें खास तौर पर जो डभोई के विधायक है शैलेश सोट्टा, उनकी अगुवाई में और उनके मार्गदर्शन में यह आयोजन किया गया था. स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर यह आयोजन हुआ, जिसमें वाघोड़िया रोड विस्तार के करीबन 500 से ज़्यादा लोगों ने अपनी चिकित्सा करवाई थी. और साथ ही में जो लेबोरेटरी समेत के विभिन्न टेस्ट है वो भी वहाँ पर जो सर्वरोग निदान कैंप है वहीं पर किए गए थे. और साथ ही में करीबन 15 जितने एक्सपर्ट डॉक्टर की उपस्थिति में जो लोग मरीज है उन लोगों की चिकित्सा आज आयोजित की गई. આ કાર્યક્રમના સફળ આયોજન માટે અમારા મુખ્ય વાઘોડિયા રોડ પર સૂર્યનગર ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખાતે આજે મેગા મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન માનની સરગસ અટલ બિહારી વાજપેયીની સ્મૃતિમાં રાખવામાં આવ્યું છે. સાથે જ આપણે આઝાદીના 75 વર્ષ પૂરા થયા છે, એને અનુલક્ષીને સરકાર દ્વારા પણ વિવિધ કાર્યક્રમો થઈ રહ્યા છે. ત્યારે ડૉક્ટર અભિષેક શર્મા અને ગ્રેસ લેબોરેટરી બંનેના સંયુક્ત ક્રમે
લગભગ 14 જેટલા વિવિધ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડૉક્ટરો દ્વારા આ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આપ જોઈ શકો છો કે મોટી સંખ્યામાં લોકો એનો લાભ લઈ રહ્યા છે. પ્રથમવાર આ કેમ્પનું અહીંયા આગળ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, પરંતુ પોલીસ સ્ટાફ, કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ અને અન્ય લોકો દ્વારા આ કેમ્પનો લાભ લેવામાં આવી રહ્યો છે. આપણે છેલ્લે 2 વર્ષથી જે મહામારીમાંથી પસાર થયા ત્યાર પછી જ આપણને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતતા આવી છે. આજે દેશમાં અનેક ઠેકાણે સાયકલથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એમાં વડોદરામાં પણ 178 જગ્યાએ સાયકલથોનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. એની પાછળ પણ સરકારનો એક જ આશય છે કે લોકોમાં જાગૃતિ આવે, બિનચેપી રોગો સાયકલિંગથી દૂર રહે છે, એટલા માટે સાયકલિંગ જરૂરી છે. અને આ બધા ડૉક્ટરો દ્વારા ફક્ત નિદાન નથી કરવાના, પણ સાથે સાથે જે દર્દીને જરૂર પડે એ દર્દીને મેડિસિન પણ નિઃશુલ્ક આપવાનો અહીંયા આગળ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. એટલે આ કેમ્પની આ વિશેષતા છે કે તમામ વસ્તુ ફ્રીમાં જે ડૉક્ટરો સ્પેશિયાલિસ્ટ છે એમના દવાખાનામાં જાઓ ને એમના જે ચાર્જ હોય એની સામે મફતમાં તમારું નિદાન પણ કરવામાં આવે છે. અને નિદાન કર્યા પછી જે મેડિસિનની જરૂરિયાત હોય એ મેડિસિન પણ 15 દિવસ, 20 દિવસ, મહિના માટે જે જરૂરિયાત લાગે એ પ્રમાણે ડૉક્ટરો દ્વારા એ પણ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ આપવામાં આવી રહી છે. અને ગ્રેસ લેબોરેટરી દ્વારા જેના જે કંઈ સેમ્પલ લઈને રિપોર્ટિંગ કરવાનું હોય એ રિપોર્ટ પણ એમના દ્વારા કરવામાં આવશે. ત્યારે આ તમામને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા પાઠવું છું. નિઃશુલ્ક સર્વરોગ નિદાન કેમ્પ રાખેલો છે. એમાં 14 સ્પેશિયાલિટીઝ છે, બધા જ ડૉક્ટર્સ અવેલેબલ છે. દરેક રિપોર્ટ્સ પર આપણે 50% ઓફ રાખેલું છે. દરેક ડૉક્ટરનું કન્સલ્ટિંગ મફત રાખેલું છે અને બધા જ પેશન્ટને રાહત દરે રિપોર્ટ્સ થાય એવી પણ આપણે અહીંયા સુવિધા રાખેલી છે. દરેક પેશન્ટ બહુ જ સારી રીતે મેનેજ થાય એના માટે આપણો પૂરતો સ્ટાફ અહીંયા રાખ્યો છે. બધાને ચા નાસ્તાની વ્યવસ્થા રાખેલી છે. બધા ડૉક્ટર્સનું જમવાનું તે બધું જ આપણે અહીંયા બહુ જ સારી રીતે મેનેજ કર્યું છે. લેબોરેટરી પણ આખી આપણે એક સેટઅપ કરેલું છે અહીંયા, જેનામાં દરેક રિપોર્ટ્સ રાહત દરે થશે. અને એ લેબોરેટરીના દરેક લોકો જે છે એ બહુ જ સારી રીતે કામ કરી રહ્યા છે, ગ્રેસ લેબોરેટરીના માણસો. અને મેનેજમેન્ટ પણ આપ જોઈ શકો છો એ પ્રમાણે આપણે રાખ્યું છે. શૈલેષભાઈ સોટા જે આપણા અહીંયાના ડભોઈના ધારાસભ્ય છે એ પણ અહીંયા હાજર રહેશે. એમના જ હાથે આપણે આ બધું શરૂઆત કરાવી છે. એમના માર્ગદર્શન હેઠળ જ આપણે આ કામ કરી રહ્યા છે. અને આગળ એવી ઈચ્છા છે કે આવા જ કેમ્પો વારંવાર થયા કરે અને લોકોને સારી રીતે, નિઃશુલ્ક રીતે સુવિધા અને સેવા મળતી રહે. स्वामीनारायण संप्रदाय के परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी के पंचम स्मृति दिन के तहत आज मांझलपुर में आध्यात्मिक धाम में एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था. आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाता जुड़े थे. इसकी शुरुआत मांझलपुर के विधायक योगेश पटेल समेत मेयर केयूर रोकड़िया के हाथों से दीप प्रागट्य के साथ की गई थी. इसमें एसएसजी अस्पताल के जो ब्लड बैंक है उनकी ओर से सहयोग दिया गया था. करीबन 500 से ज़्यादा रक्त एकत्रित करने का लक्ष्यांक यहाँ पर रखा गया है. स्वामीनारायण संप्रदाय के युवाओं की ओर से यह आयोजन किया गया था, जिसमें परम पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी के पाँचवीं मासिक तिथि है उसके उपलक्ष्य में और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये पूरा आयोजन हुआ. पूज्य હરિપ્રસાદ સ્વામીજીના પંચમ સ્મૃતિના દિને આજે આત્મીય ધામ માજલપુરમાં બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ સયાજી હોસ્પિટલ દ્વારા રાખવામાં આવ્યો છે. અહીં આશરે આજે વધારે લોકો સવારથી જ બ્લડ ડોનેશન કરી રહ્યા છે અને લગભગ 501 જેટલા
બોટલો એટલે 500 જેટલા રક્તદાન યુવાનો કરવાના છે એ જાણીને આનંદ છે. આજનો આ બ્લડ ડોનેશનનો કેમ્પ આઝાદીના 75 વર્ષનો અમૃત મહોત્સવ અને પ્રગટ બ્રહ્મ સ્વરૂપ શ્રી પ્રસાદ સ્વામીજીના 5મા સ્મૃતિ દિન તરીકે અમે બ્લડ ડોનેશન દ્વારા ઉજવી રહ્યા છીએ. બ્લડ એવી વસ્તુ છે કે જે ભગવાને પોતાની એક જે મોનોપોલી છે એ બ્લડ છે, કદી બની નથી શકતું. અને આપણે ચાહીએ તો બીજાના શરીરમાં એ બ્લડ રૂપે આપણે પ્રવાહ કરી શકીએ છીએ એવા એક ઉદ્દેશ સાથે એક સામાજિક પ્રવૃત્તિ થાય અને સ્વામીજીની આત્મીયતા અને સેવા અને સમર્પણનો એક ગળતલ સ્વરૂપે સમાજમાં પ્રસ્થાપિત થાય, પ્રવર્તે. એ હેતુથી આજે આ બ્લડ ડોનેશનનો કેમ્પ આખા ગુજરાતમાં દરેક પ્રદેશમાં અલગ અલગ જગ્યાએ આજે બ્લડ ડોનેશનનો કેમ્પ થઈ રહ્યા છે. આશરે 8770 બોટલ, સ્વામીજીને 87 વર્ષ થયા હતા, તો 8770 બોટલ કલેક્શન કરી અને ડોનેશન સ્વરૂપે આપવાનું આ એક અભિગમ છે. અને આત્મીયતાથી ગળતલ સ્વરૂપે હોલાઉપાડથી આ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છીએ. સાથે સાથે પ્રધાનમંત્રીની સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં આખા ગુજરાત પ્રદેશમાં 14,000 દીકરીઓને, નાની દીકરીઓને દત્તક લઈ, એવી રીતે ભગતજી પ્રદેશમાં વડોદરામાં 1088 દીકરીઓને દત્તક લઈ અને પ્રધાનમંત્રીની યોજના પ્રમાણે એમના માટે સેવા કાર્ય કરવા જઈ રહ્યા છીએ. સ્વામીજી જે ઉચ્ચ મૂલ્યો, સામાજિક મૂલ્યો અને સેવાના મૂલ્યો જે સમાજમાં પ્રસ્થાપિત કર્યા છે એ આવી રીતે અમારા દ્વારા સ્વામીજી અમને નિમિત્ત બનાવે અને અમે એમને આગળ વધાવી શકીએ. અને આત્મીયતા, સમસુરતભાવને એકતા અને જે સ્વામીજીનું યુવાનો સર્વસ્વ, મારું સર્વસ્વ છે, યુવાનો સ્વામીજી માટે પૂજા છે, એ જે સંકલ્પ સ્વામીજીનો, એના માટે અમે સૌ નિમિત્ત બની શકીએ, આત્મીયતાથી જીવન જીવી શકીએ. એ માટે અમારા વડીલ માવતરો પૂજ્ય પ્રેમ સ્વરૂપ સ્વામીજી વગેરે આ સૌ એના માટે સંકલ્પબદ્ધ છીએ અને એ માટે આ સેવાયજ્ઞ કરી રહ્યા છે. એ સેવાયજ્ઞમાં અમે સફળ થવાના છીએ. સ્વામીજીના આશીર્વાદ છે. એવી રીતે ફ્યુચરમાં પણ અવારનવાર આવી સામાજિક સેવા સ્વરૂપે યોગી ડિવાઇન સોસાયટી કાર્યરત છે અને એના કાર્ય દ્વારા સમાજમાં યુવા જાગૃતિ, નિર્વ્યસની યુવાનોનો ઘડતર, એ માટે અમે લોકો સંકલ્પબદ્ધ છીએ. એ માટે સ્વામીજી અને સૌ વડીલ સંતો અમને સહાય કરે, આશીર્વાદ આપે, એ જ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. श्रीमद् भगवत गीता को अब आप अपनी भाषा में पढ़ भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे. जी हाँ, ये बुक को एनिमेटेड तरीके से बनाया गया है. ये जो धार्मिक ग्रंथ है उसको एनिमेटेड तरीके से तैयार किया गया है और ये तैयार किया है आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर के मार्गदर्शन में उनके अनुयायियों की ओर से. आज बड़ौदा शहर में जिला पंचायत भवन में इसका विमोचन किया गया. भगवत गीता 11 भाषाओं में एनिमेटेड तरीके से तैयार की गई है. एक बुक के रूप में इसे तैयार किया गया है और साथ ही में एक डिवाइस दी गई है जिसके ज़रिए आप जिस श्लोक पे उसको रखेंगे वो श्लोक आपको आपकी भाषा में सुनाई भी देगा. जी हाँ, साथ ही में संपूर्ण हनुमान कथा भी इसी तरीके से एनिमेटेड तरीके से तैयार की गई है जो 9 भाषाओं में तैयार की है. आज इस दोनों पुस्तकों का विमोचन किया गया था. यहाँ से चालू होता है पहला श्लोक, पहले अध्याय का. संस्कृत में अगर अपने को पूरा सुनना है तो इस शंख पे टच करेंगे, वो संस्कृत में आएगा इस प्रकार से. एक्चुअल में सर ये गीता को बनाने के पीछे एक उद्देश्य है. ये जो गीता है इसको आप पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो. अभी एक लेटेस्ट भगवत गीता लॉन्च की गई है जो कि 11 भाषाओं के अंदर बनाया गया है ताकि हर आदमी अपनी अपनी भाषा में उसको पढ़ सकता है, सुन भी सकता है. विद एनिमेशन के साथ डाला गया है, इसमें म्यूजिक भी डाला गया है. इसको बनाने के पीछे एक वजह है ताकि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग जो भी लोग हैं
वो सब इसका सही समय पे उपयोग कर सकें। और एक ग्रंथ और डिजाइन किया गया है जिसका नाम है संपूर्ण हनुमान। उसमें हनुमान जी की पूरी जीवनी दी गई है, वो 9 भाषाओं के अंदर डिजाइन किया गया है विद एनिमेशन के साथ। उसको आप पढ़ भी सकते हो, सुन भी सकते हो। ये ग्रंथ इसलिए बनाया गया है ताकि जो आज की भागदौड़ का जो समय हो चुका है, जिसमें लोगों का टाइम नहीं है अपनी संस्कृति को जानने के लिए और सबसे बड़ा ज्ञान जो है गीता का उसको जानने के लिए, तो उस भागदौड़ की स्थिति में भी हम समय निकाल के अपने समय के अनुसार इसको कैसे यूज़ कर सकें, ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं। और आज इसका हमें जो पूरे हिंदुस्तान में अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हम जगह जगह इसके बारे में लोगों को जाके बता रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। घरों में अपने बच्चों के अंदर आए हुए परिवर्तन को देख के वो लोग भी हमारे साथ सपोर्ट कर रहे हैं और अपने मिलने वालों को इसके बारे में बता रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँचे और घर घर गीता और हनुमान जी जो नए युग में नए अवतार में बनकर आए वो हर घर पहुँच सकें। सर वैसे तो इसकी जो बनाने की कॉस्ट है वो लगभग 14,995 रुपये इसकी MRP है, लेकिन इसकी हमारी वेबसाइट पे सेल है जो कि अभी जो सेल चल रही है लगभग 10,690 रुपये विद GST के साथ ये पे हो रहा है। होम डिलीवर्ड है। आप जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे जाके ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे आप हमारी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर में आपके पास डिलीवर्ड हो जाता है। कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कंटिन्यू। जैसे अगर आप गीता का कोई चैप्टर सुनना चाहते हो तो एक ऑप्शन है, उस पर आप टच करोगे तो पूरी भगवत गीता आपको कंटिन्यू जिस भी लैंग्वेज में आप सुनना चाहते हैं वो आपको बोल के बताए। बड़ौदा शहर के वाघोड़िया रोड विस्तार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। युवा ब्यूटी कॉन्टेस्ट के तहत ये आयोजन किया गया था, जिसमें उम्रदराज महिलाओं को फैशन शो में आमंत्रित किया गया था। खास तौर पर नारी शक्ति को उजागर करने के लिए आयोजन किया गया, जिसमें जो महिलाओं में छिपी प्रतिभा है उन्हें बाहर लाने के लिए मंच दिया गया था। युवास फैशन प्रेजेंट की ओर से यह आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही थी और करीबन 13 पार्टिसिपेंट महिलाओं ने रैंप वॉक किया था। એની માટે અમે એવું કહીશું કે આ યુવાસ બ્યુટી પેજન્ટ સૌથી બેસ્ટ મંચ છે, જ્યાં હાઉસવાઈફ અને બધી જ ગર્લ્સ કિડ્સ બધા માટે આ બહુ જ સારો મંચ છે. તો બધાએ જ આનામાં પાર્ટિસિપેટ કરવો જોઈએ અને આગળ પણ આ શો ચાલે ઇન્ટરનેશનલ લેવલ સુધી, ત્યાં સુધી અમે એમને પાર્ટિસિપેટ કરી શકીએ અને એને આગળ સુધી લાવી શકીએ એવો અમારો આભાર. हाय युवा ब्यूटी पेजेंट, सोनल मैम जिसने ये शो ऑर्गेनाइज़ किया है युवा ब्यूटी पेजेंट्स में, जिसको मिस गुजरात का अवार्ड दिया जाएगा यहाँ पे आज, उन्होंने जो काबिलियत उन्होंने उनकी हासिल की, हाउस वाइफ होके भी जो स्ट्रगल करके यहाँ तक उन्होंने इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मैं चाहूँगी जो हाउस वाइफ जो घर से बाहर कभी नहीं निकलती है उनको भी आना चाहिए और इनके शो में इसके बाद नेक्स्ट राउंड इससे भी बड़ा होगा, इसमें इनको शो में सबको आना ही चाहिए। जो हाउस वाइफ है, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली लड़की, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी करना चाहिए और आगे बढ़ो और इससे बड़े बड़े राउंड्स हो गए, उसमें इंडिया के टॉप लेवल तक जाना चाहेंगे। इसलिए तो सोनल मैम का भी थैंक्स और धन्यवाद कि जो हाउस वाइफ को भी इतना कॉन्फिडेंस जगाया, उन्होंने खुद हाउस वाइफ थे और उन्होंने इतना सब कुछ किया है। तो आज मैं सब हाउस वाइफ को यही कहना चाहूँगी कि इस शो में और आप भी बाहर निकलिए और बाहर अपना नाम कमाइए सोनल मैम की तरह। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज। BRG ग्रुप
बिहार ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। खबर जूनागढ़ से आई है। जूनागढ़ में आज 8 करोड़ की लागत से कृषि भवन का जो निर्माण किया जाने वाला है उसका आज खातमुहूर्त किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के हाथों से ये खातमुहूर्त किया गया। बड़े पैमाने पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कृषि प्रदर्शन भी आयोजित हुआ। खासतौर पर बड़े भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल का स्वागत इस समारोह में किया गया था। इसमें जूनागढ़ के आसपास के कई किसान मौजूद रहे थे। करीबन 1000 से ज़्यादा किसान यहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही में जो कृषि प्रदर्शन आयोजित किया गया था इसमें 30 से ज़्यादा कृषि प्रदर्शन के स्टॉल भी लगाए गए थे। ये जो कृषि भवन का निर्माण किया जा रहा है, इस कृषि भवन में करीबन 200 से ज़्यादा किसान एक समय पर रह सके यानी कि निवास कर सके ऐसी व्यवस्था खड़ी की जा रही है। खासतौर पर स्वर्गस्थ अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री है, उनके जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी और राज्य सरकार की ओर से सुशासन सप्ताह आयोजित किया गया था, जिसके तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये आयोजन किया गया, जिसमें खासतौर पर किसानों को और ज़्यादा उनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए और साथ ही में जो कृषि उत्पाद है उसके सही दाम उन लोगों को मिल सके, उस हेतु से कृषि भवन का निर्माण किया जाने वाला है। और साथ ही में जो कृषि प्रदर्शन आयोजित किया गया, इसमें कृषि की अत्याधुनिक पद्धतियों को रखा गया था। ये पूरा आयोजन जूनागढ़ में जो मार्केटिंग यार्ड है वहां पर किया गया था और CR पाटिल समेत यहाँ पर जो प्रवासन मंत्री है अरविंद रैयाणी और साथ ही में पशुपालन मंत्री देवाभाई मालम और सांसद राजेश चुडासमा के समेत भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता वहां पर मौजूद रहे थे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष श्री गोवर्धन भाई झड़पिया, श्री धवल भाई दवे, श्री रामसिंह भाई बेटारिया। जन्मदिवस છે। ભારતીય રાજનીતિના અજાતશત્રુ જીવન સમગ્ર ભારત માતાને સમર્પિત કરનાર अब खबर पादरा से आई है। पादरा के कड़वा पाटीदार समाज की ओर से एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें ऊंजा स्थित श्री उमिया माता मंदिर में करीबन 500 से ज़्यादा जो सीनियर सिटीज़न हैं और जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें दर्शन करवाए गए थे। पादरा से इन सभी लोगों को बस के माध्यम से ऊंझा ले जाया गया था और साथ ही में उमिया माता परिसर जो है वहाँ पर नवचंडी यज्ञ का भी आयोजन किया गया था, जिसमें ये जो सीनियर सिटीज़न हैं और जो विधवा महिलाएं हैं उन्हें इस नवचंडी यज्ञ में धार्मिक आयोजन में एक सहयोग दिया गया और धार्मिक आयोजन में उन्हें बिठाया गया था। कड़वा पाटीदार समाज की ओर से ये पूरा आयोजन किया गया, जिसमें उमिया परिवार भी जुड़ा हुआ था। पान फूल चोखा लीधा जाओ पधारो, हमारी सेवा में आप स्वीकार कर दो। कारण के भगवान गीता जी में कहू पत्र पुष्पा फलम तो यमे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान के भक्त मन श्रद्धा थी जे आपे छे तेनो स्वीकार करू छू। भगवान बोल मारी उमिया जय जय उमिया, बोल मारी उमिया जय जय उमिया, बोल मारी उमिया जय जय उमिया, बोल मारी उमिया जय जय उमिया। પાદરા તાલુકાના કડવા પાટીદાર સમાજના આગેવાનોએ ભેગા મળીને પાદરા તાલુકાના કડવા પાટીદાર સમાજના સિનિયર સિટીઝન તેમજ વિધવા બહેનોને આજરોજ એઠોર, બહુચરાજી, સંખલપુર તેમજ ઊંઝા ઉમિયા માતાના દર્શન કરાવ્યા તેમજ કડવા પાટીદાર સમાજના કુળદેવી શ્રી ઉમિયા માતાના ધામ ઊંઝામાં નવચંડીનું આજરોજ આયોજન કરવામાં આવ્યું।
अब खबर नर्मदा जिले राजपीपला से आई है। राजपीपला में भी सुशासन सप्ताह का आरंभ किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉल में एक विशेष कार्यक्रम के तहत सुशासन सप्ताह का आरंभ हुआ, जिसमें नर्मदा जिला कलेक्टर डीए शाह समेत राजपीपला और नर्मदा प्रशासन के कई आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे थे। खास तौर पर इस सुशासन सप्ताह की शुरुआत में जो सरकारी योजनाओं का लाभ है, उसके जो लाभार्थी है उन्हें ये लाभ दिया गया था, और साथ ही में सरकारी योजनाओं को पाने के लिए या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिन जिन नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उन सभी नागरिकों को एक ही जगह पर इसका सॉल्यूशन देने के लिए और ये योजनाओं का लाभ देने का प्रयास इस सुशासन सप्ताह में किया गया है। ये पूरा आयोजन राजपीपला के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हॉल में किया गया था। सुशासन दिवसना आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल द्वारा सुशासन सप्ताहની ગાંધીનગર ખાતેથી જ્યારે આજે પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે નર્મદા જિલ્લાની અંદર પણ સુશાસન સપ્તાહનો આજે વિધિવત પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। સુશાસન સપ્તાહની અંદર 7 દિવસમાં અલગ અલગ પ્રકલ્પો દ્વારા સમાજના શોષિત, વંચિત, પીડિત, અંત્યોદય પથ સાથે વસતા સમાજના સર્વાંગી વિકાસ માટે સાથે સાથે સામાજિક પરિવર્તન, આધ્યાત્મિક પરિવર્તન, પ્રાકૃતિક પરિવર્તન, યુવા પરિવર્તન અને સમાજની અંદર સર્વાંગી વિકાસ થઈ હેઠળ અલગ અલગ પ્રકલ્પો દ્વારા ગુજરાત સરકાર, જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને નીચે સુધી પહોંચેલું વહીવટીતંત્ર આ કાર્યરત સેવા માટે આગળ અને કદમ સે કદમ મિલાવીને જ્યારે કાર્ય કરી રહ્યું હોય, ત્યારે સુશાસન સપ્તાહની સાચી ઉજવણીનો આ દોર શરૂ થયો છે। આદરણીય ભારત રત્ન પરમ શ્રદ્ધેય પરમ આદરણીય ભારતના વડાપ્રધાન એવા શ્રી અટલ બિહારી વાજપેયીજીના જન્મદિન નિમિત્તે આજથી જ્યારે સુશાસન દિવસની શરૂઆત થાય છે, ત્યારે સરદાર સાહેબની આ ભૂમિ એટલે કે સ્ટેચ્યુ ફોર યુનિટી, વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમાની જગ્યા પર જ્યારે સુશાસન સપ્તાહની ઉજવણી થઈ રહી હોય, ત્યારે નર્મદા જિલ્લાના વહીવટીતંત્રને, સમગ્ર પ્રશાસનિક તંત્રને હું મારી શુભેચ્છાઓ પાઠવું। अब खबर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि नर्मदा जिले के पीपरिया गांव के पास वन विभाग के अधिकारियों की ओर से रात को 1:30 बजे के करीब गश्त लगाई जा रही थी, तब अवैध तरीके से काटी जा रही साग की लकड़ियों के साथ एक नाव को हिरासत में लिया गया है। इस नाव में करीबन 6 लोग सवार थे, जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 4 लोग फिलहाल फरार घोषित किए गए हैं। इस पूरी कार्यवाही में जो वन्य विभाग के अधिकारी और उनकी टीम है, ये पूरी टीम ने जो जानकारी मिली थी, उस जानकारी के आधार पर वहां पर रेड की और रेड में अवैध तरीके से काटी जा रही साग की लकड़ियां बरामद की गई है और 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही में एक नाव को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, ये पूरी जो ऑपरेशन है, ये पूरा ऑपरेशन वन विभाग के अधिकारी वीरेंद्र घड़िया समेत फॉरेस्ट के जो पुलिस अफसर है पृथ्वी सिंह गोहिल और विक्रम सिंह की अगुवाई में किया गया था और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 6 लोगों के खिलाफ यहाँ पर इस कार्यवाही में FIR दर्ज की गई है। खबर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आई है, जहां पर 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस त्यौहार के जो शनिवार और इतवार आए हैं, उसको लेकर सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई। एक ही दिन में 30,000 सैलानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी देखा और आसपास के जो आकर्षण है उसका भी जायजा लिया। तब ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 30,000 से ज़्यादा सैलानियों की भीड़ चिंता का विषय बनी है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जो ऑनलाइन बुकिंग है वो हो चुकी है, वो फुल हो चुकी है। तब ओमिक्रॉन के खतरे के बीच 8 महानगरों में जो रात्रि कर्फ्यू है वो 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर दिया गया है और राज्य सरकार की ओर से ओमिक्रॉन का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, उस तरह से अस्पतालों में मेडिकल सुविधाएं भी बढ़ा दी गई है। तब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर इतने बड़ी संख्या में सैलानियों की उपस्थिति कहीं ना कहीं चिंता का सबब बन रही है। तब शनिवार और इतवार और छुट्टियों के चलते अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सैलानियों की भारी भीड़ देखी गई, जिसकी तस्वीरें बयां कर रही है।
अब खबर करजन से आई है। वलन सोशल वेलफेयर और एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से आज आंखों के इलाज का निशुल्क कैंप आयोजित किया गया था। वलन अस्पताल में ही ये कैंप आयोजित किया गया, जिसमें करजन और वलन गांव के आसपास के जो करीबन 400 से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें आंखों से जुड़ी बीमारी थी, उन सभी का इलाज किया गया और वो भी निःशुल्क। आंखों से जुड़ी बीमारी यानी कि मोतिया का भी ऑपरेशन इस कैंप में किया गया था और वो भी निःशुल्क तरीके से किया गया। इस पूरे आयोजन में डॉक्टर राजेश पटेल और डॉक्टर हनीफ खत्री की ओर से अपनी सेवाएं दी गई थी। आज 26 डिसेम्बर 2021 वलन सोशल वेलफेर ट्रस्ट जो वलन गामમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી અલગ અલગ સેવામાં કાર્યરત છે, જેમાં શિક્ષણ, મેડિકલ એવી તમામ સેવા આપતા આ ટ્રસ્ટને હાલ જ 10 વર્ષ પૂર્ણ થઈને 11મા વર્ષમાં પદાર્પણ કર્યું છે। ટ્રસ્ટ દ્વારા એલોપેથિક હોસ્પિટલ આ રૂરલ એરિયામાં એટલે ગામડામાં ખૂબ જ સરસ રીતે સેવા આપે છે, જે કે છેલ્લા 2 વર્ષમાં કોરોનાના બંને લેયરમાં આપણે અનુભવ્યું છે, જનતાએ અનુભવ્યું છે। આગામી વર્ષમાં ટ્રસ્ટે જે હોમિયોપેથિક કોલેજ આ જ સંકુલમાં ચાલુ કરવા બાબતે જે નિર્ણય લીધો છે આ સ્વાગતરમ્ય છે, જેનું કામકાજ પણ સરસ રીતે ચાલે છે। એનો જ એક ભાગ તરીકે અહીંયાનું હોમિયોપેથિક હોસ્પિટલ જે છેલ્લા 2 વર્ષથી ચાલે છે, આજે વલણ હોમિયોપેથિક હોસ્પિટલ દ્વારા એક નિઃશુલ્ક કેમ્પ અને દવા વિતરણ આયોજન કરવામાં આવેલ છે। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।